हेलो फ्रेंड्स मु सरोजिनी आज आम पढ़ा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी स्कूल मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन देखा देखा कौन ना प्रथमे क्वेश्चन पैटर्न देखिए केमती कौन क्वेश्चन आसुची कौन केते मार्क आसुची से सब लक्ष्य करेंगे देछि कौन ना TLM शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू कही कौन ना TLM टा कौन भी पचार देखा TLM केते प्रकार ना 4 प्रकार कौन कौन ना ऑडियो वीडियो आउटे ऑडियो वीडियो आउटे है साइकोमोटिव ताने TLM केते प्रकार 4 प्रकार ऑडियो वीडियो आउटे है साइकोमोटिव बुझिगल ताने केते प्रकार 4 टाइप्स गोटे है ऑडियो है वीडियो वीडियो आउटे कौन ना साइकोमोटिव बुझिपार ताने से पचार कौन TLM शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू या भर कौटा जोटा कि दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी देछि कौन ना अकॉर्डिंग टू BF स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन टेक्स प्लेस एज एन आउटकम ऑफ डेट्स कौन हम इनवर्न कैपेसिटी ना ट्रेनिंग इन ग्रामर ना इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट ना मैच्योरिटी कौटा हम जोटा कि इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट जोटा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखिए कौन ना अकॉर्डिंग टू जोहानसन एंड सोलोमन स्टैमरिंग इज मेनली ड्यू टू डेस कौटा हम जोटा कि इमोशनल टेंशन एज ऑब्जर्व इन एक्सेसिव फियर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन कही ना इमोशनल टेंशन एज ऑब्जर्व इन एक्सेसिव फियर देखिए कौन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड्स देखिए कौन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर लर्नर सेंटर कौटा लर्नर सेंटर बोली पचार प्रोजेक्ट वर्क ना चॉक एंड टॉक ना लेक्चरिंग विथ ऑडियो विजुअल ना कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन ना साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग या भर कौटा हम प्रोजेक्ट वर्क तो केबे होबनी एटा कौन गोटे टीचर सेंटर सेमती चॉक एंड टॉक एटा भी हम ना कौन हम लेक्चरिंग विथ ऑडियो विजुअल एटा भी हम ना कौन ना कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन आउ कौन हम ना स्टिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग केतटा ठीक ये 3टा हूँ भूल तेल कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन आउ साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग ये 2टा ताने IV आउ V 2टा हूँ करेक्ट आंसर कौन हम ना बोथ जोटा कि IV आउ V बुझिपार देखिए कौन व्हिच इज द पीरियड फॉर एक्वायरिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ सोशल सबऑर्डिनेशन टू अथॉरिटी फिगर्स आउटसाइड द फैमिली कही कौन ना व्हिच इज द पीरियड ऑफ एक्वायरिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ सोशल सबऑर्डिनेशन टू अथॉरिटी फिगर्स आउटसाइड द फैमिली कौन कही इन्फेंसी ना अर्ली चाइल्डहुड ना लेटर चाइल्डहुड ना एडोलेसेंस कौटा हम जोटा कि लेटर चाइल्डहुड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखिए कौन ना दिस स्टेटमेंट इन ए मल्टीपल चॉइस टाइप आइटम इज नोन एज प्रथमे जानिबा कौन कही ना स्टेम डिस्ट्राक्टर रेस्पॉन्स क्वेश्चन देखा क्वेश्चन तो जानिच एटा गोटे कौन कहूँ क्वेश्चन कहूँ तापर रेस्पॉन्स क्या कहूँ देखिए कौन ना द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली देखा कौन ना द कैपिटल ऑफ इंडिया इज कौन ना दिल्ली दीदी एटा गोटे कौन यदि पचार दी कैपिटल ऑफ इंडिया तेल एटा गोटे कौन हम क्वेश्चन जो तार आंसर कौन आसुची दिल्ली जो करेक्ट आंसरटा आसुची एटा को कौन बोली कहउची ना रेस्पॉन्स बोली कहउची बुझल ताने कैपिटल ऑफ इंडिया यदि क्वेश्चन पचरा होची तार आंसर बाहरुची दिल्ली ताले कौन हम सेटा रेस्पॉन्स ताले जो क्वेश्चन टा पचरा होची ताले एटा कौन स्टेम जो क्वेश्चन टा पचरा होची एटा होची स्टेम जोड़ा आंसर बाहरुची ताले ताको कौन कहउची ना रेस्पॉन्स बुझिपारलो ताने डिस्ट्राक्टर क्या कहउची
जोड़ा गोटे क्वेश्चन देइथिबो पचारिथिबो तार कोन थिबो ऑप्शन पार्ट देइथिबो जेमति एटा गोटे क्वेश्चन देला तार ऑप्शन पार्ट देइची तले ताको कोन कुहाउची ना डिस्ट्रैक्टर कुहाजिबो सेमति जदि क्वेश्चन ए क्वेश्चन टाको कोन कुहाउची जोटा कि प्रॉब्लम पार्ट बोली कुहाउची बुझि परछो तने स्टेम कोटा जोटा कि मल्टीपल चॉइस टाइप थिबो बा एमसीक्यू थिबो सेटा को कोन बोली कुहाउची स्टेम बोली कुहाउची करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बुझि पाला स्टेम का कुहाउची भले से बुझि कि जाओ देइची कोन ना स्टेम होउची एमसीक्यू बा मल्टीपल चॉइस टाइप जोटा कहउचंदी सेटा कोन कुहाउची स्टेम बोली कुहाउची देइथिबो कोन इन एमसीक्यू आइटम द प्रॉब्लम पार्ट इज कॉल्ड डैश पचारथिबो कोन ना स्टेम ना डिस्ट्रैक्टर ना रेस्पॉन्स ना क्वेश्चन एमती पचारथिबो तले एटा कोन आसीबो स्टेम होबो एमसीक्यू पार्ट आसीबो माने जाननेबे स्टेम सेमती क्वेश्चन तो जानथिबो नॉर्मल जदि किछि पचारिछि एमती क्वेश्चन देइथिबो तने एटा कोन क्वेश्चन तापर रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स तो कहली जदि एटा गोटे क्वेश्चन पचारिछि तार जदि आंसर आसुछि तले सेटा कोन बोली कहउछि रेस्पॉन्स डिस्ट्रैक्टर कोन ना गोटे क्वेश्चन देइथिबो जेमति द कैपिटल ऑफ इंडिया पचारिथिबो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज डैश पचारिकी तापर जो ऑप्शन गुडा देइथिबो दिल्ली ना भुवनेश्वर ना कटक एवला जदि क्वेश्चन ऑप्शन देइथिबो ताले सेटा कोन बोली कहउछि ना डिस्ट्रैक्टर से कोन गला डिस्ट्रैक्टर गला सेमति द अदर इंटीरियर ऑप्शन इनकरेक्ट जोटा भूल थिबो ताको कोन कहजिबो ना डिस्ट्रैक्शन कोन बोली कहजिबो ना डिस्ट्रैक्शन इनकरेक्ट जोटा बुझि पाइलो आ गोटे कोन देइथिबो ना द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड सॉल्यूशन यदि कुछ सॉल्यूशन को सजेस्ट करथुओ ताको कोन कहजिबो ना अल्टरनेटिव बोली कहजिबो आ गोटे देखिबा मैचिंग टाइप बेसी एटा पड़े स्टेम पड़े रेस्पॉन्स पड़े डिस्ट्रैक्टर पड़े आ कोन पड़े ना मैचिंग टाइप रो कोन देइथिबो ना कॉलम ए रे देइथिबो किछि क्वेश्चन आ कॉलम बी रे कोन देइथिबो किछि आंसर देइथिबो या सहित माने कॉलम ए सहित कॉलम बी रो कोन संपर्क रहिछि माने कोटा कहा सहित सेटा को गारो टाणीबा को कोन बोली कहउछि मैचिंग टाइप यदि कॉलम ए रे जो क्वेश्चन गुडा रहउछि देखिबा निछि कोन धर एठी कॉलम ए एपटे कोन ना कॉलम बी एपटे कोन ना क्वेश्चन एपटे कोन थिबो आंसर आंसर थिबा तो जानछन समस्ते एठी हमर जदि क्वेश्चन देथिबो 1 2 3 4 जहा देथिबो कॉलम बी रे देथिबो कोन तार आंसर देथिबो धर 2 1 3 4 एमती जदि देथाय तले आमे कोन करबा क्वेश्चन सहित आंसर खोजिबा तापर कोन करबा कार टाणीबा तने क्वेश्चन टाकू कोन बोली कहउची ना प्रीमाइजेस क्वेश्चन को कोन कहउची ना प्रीमाइजेस सेमती आंसर को कोन बोली कहउची ना रेस्पॉन्स इटा मन रखिबे प्रीमाइजेस का कहउची क्वेश्चन पार्ट को कहउची प्रीमाइजेस तने आंसर पार्ट को कोन बोली कहउची ना रेस्पॉन्स बोली कहउची बुझि पालो दिस कोन ना हु वाज द फर्स्ट टू यूज मल्टीपल चॉइस आइटम्स फ्रॉम असेसमेंट इन दिस कोन ना 1915 माने 15 कहिची 1915 हु वाज द फर्स्ट टू यूज किए प्रथमे व्यवहार करथिले मल्टीपल चॉइस आइटम टा 1915 रे कोन पाई ना असेसमेंट पाई किए ना जोटा कि एफजे केली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी किए ना एफजे केली देखि कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी कोटा लैंग्वेज एंड पावर ना डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस ना दी न्यूट्रलिटी ऑफ नॉलेज ना ऑल ऑफ दिस कोइ कोन ना क्रिटिकल पेडागोजी रे कोटा देछि कोन ना ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेज ऑफ पावर लैंग्वेज एंड पावर भी होबो डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस भी होबो दी न्यूट्रलिटी ऑफ नॉलेज भी होबो देछि कोन ए परसेंटेज बेस्ड मेथड फॉर awarding grading is known as कोड़ा हबो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग ना रिलेटिव ग्रेडिंग ना बोथ ए एंड बी ना नाइदर ए नॉर बी कोड़ा हबो जोड़ा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोन ना एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कोन कहिची ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स कोन हबो ना ए मेथड व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स मेंटेन्स एंड रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन पीपल एंड जॉब्स ना द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द employees needs and aspirations with organizational needs now the process of bringing people and organization together so that the goals of each are achieved
ନା ଦି ଏଫର୍ଟସ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଲାଇଫ୍ worth living for workers କୋଉଟା ହବ जोटा कि the process of bringing people and organization together so that the goals of each are achieved. Correct answer option number C. This is Pavlov's experiments with home led to the discovery of a new principle which revolutionized thinking in social sciences. କାହାକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ପ୍ୟାଭଲଭ जो एक्सपेरिमेंट करथिले काहाକୁ ନେଇ गया भितरु कैट ना रेट ना डॉग ना सिंपाजी कोटा को जोटा कि कुकुर को नहीं करथिले कोन ना डॉग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोन ना डॉग बुझिबालो कहिछि कोन ना द इंटेलिजेंस दैट इज ऑक्युपाइड विथ ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स इज डेस यादर कोटा हबो abstract intelligence ना concrete intelligence ना social intelligence ना none of these कौन कही ना इंटेलिजेंसटा अक्युपाई करता है कोडी ना ऑब्जेक्ट और थिंग्स को ताना सेटा गोटे किसो ना कंक्रीट इंटेलिजेंस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी देछि कोन ना स्केल्स हैविंग इक्वल डिफरेंसेस बिटवीन सक्सेसिव कैटेगरीज रेफर्स टू कौन हबो ना रेफर्स टू ऑर्डिनल स्केल ना नॉमिनल स्केल ना रेशियो स्केल ना इंटरवल स्केल कोडा हबो जोटा कि इंटरवल स्केल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी which of the following types of learning materials are in the form of real objects or ideals that make the concepts very clear कोना visual material ना surrounding environment ना ICT ना tactile material जोटा कि tactile material करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये कोन ना ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग आम ऑडियो विजुअल एड जो थिला सेटा कोटा कहउछि कंप्यूटर को सेटा गोटे कोन इजी हां कोन कहछि इंटरेस्टिंग एटा भी ठीक इफेक्टिव एटा भी ठीक तले कोन हबो ना ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोन कहछि एट व्हिच एज ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड सिमिलरिटी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्ड्स को बयस रे कौन कही ना एट व्हिच एज क्यों बयस रे ए चाइल्ड पिलेटा कौन करि परिबो कैन अंडरस्टैंड बुझी परिबो सिमिलरिटी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्ड्स शब्द मध्य सिमिलरिटी और डिस्टिंक्शन कौन बोली से बुझी परिबो को बयस रे जोटा कि एट द एज ऑफ 5 to 6 years 5 ରୁ 6 वर्ष भितर ऑप्शन नंबर ए कौन कही इन ए लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ए टीचर शुड डेस learner centric approach a teacher should dash kono clarify concepts by citing examples na facilitate student learning na explain concepts by using adequate support materials demonstrate inside the classroom कोडा हबो जोटा कि facilitate student learning correct answer option number b कोन कहि ना creative learning is based on dash कौन हम ना ट्रांसफर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्किल्स ना डिस्कवर प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ना मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ना मैकेनिकल रिप्रोडक्शन फिर कौड़ा हम जोटा कि डिस्कवर प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी देखिए कौन हु प्रपोज्ड दैट ऑल चिल्ड्रेन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कौन हम पियाजेट ना चोम्स्की ना वाइगोट्स्की ना डैन स्लोविन कौड़ा हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि चोम्स्की देखिए कौन ना TLM शुड बी यूज्ड टू डेस TLM टा व्यवहार करबा उचित कोठी मेक टीचिंग मोर यूजफुल ना मेक टीचिंग इंप्रेसिव प्रोवाइड कंक्रीट एग्जांपल्स ना फैसिलिटेट लर्निंग TLM शुड बी यूज्ड कोठी व्यवहार करा जाय ना जोटी कि फैसिलिटेट लर्निंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी which of the following is not true in the context of teaching learning materials कोडा हबो पचारछि कोन नॉट ट्रू कोडा ठीक नुहे बोली पचारछि या भितरु ए ब्लैक बोर्ड
can be used for putting the cutouts of newspapers and magazines. Now, teaching can be effective through the use of audiovisual aid. Now, audiovisual aids help comprehend difficult or monotonous content. Now, textbooks are one of the main TLM used in classrooms. कोटा हबो जोटा कि ऑप्शन नंबर ए कौन ना एक blackboard can be used for putting the cutouts of newspapers and magazines. देखिए कौन ना formulating general principles based on knowledge of examples and details is known as या तो कोटा हबो coding system ना intuitive thinking ना एग्जाम्पल टू रूल मेथड ना इंडक्टिव रिजनिंग कोटा हम जोटा कि इंडक्टिव रिजनिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिस कौन ना अकॉर्डिंग टू कर्ट ल्यूइन्स व्हिच थ्योरी एडोलेसेंट्स एक्सपीरियंस ए रैपिडली वाइडनिंग लाइफ स्पेस along geography, social and future time dimensions. को थ्योरी फील्ड थ्योरी ना फोकल थ्योरी ना ग्रांड थ्योरी ना जोटा कौन ना साइको एनालिटिक थ्योरी कोटा हम जोटा कि फील्ड थ्योरी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दीजिए कौन ना द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स ए न्यू मोड ऑफ बिहेवियर व्हिच टेंड्स टू persist and affect the general behavior pattern of the organism to some degree is known as dash. कौन हम इमोशन ना लर्निंग ना मोटिवेशन ना टीचिंग कोड़ा हम जोटा कि लर्निंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कौन ना लर्निंग कौन कही ना द क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इज इंटेंड्स टू मेजर इज डैश ऑफ ए टेस्ट कोड़ा रिलायबिलिटी ना वैलिडिटी ना ऑब्जेक्टिविटी ना यूजेबिलिटी जोटा कि ऑप्शन नंबर बी कौन ना वैलिडिटी दीजिए कौन ना नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स स्टार्टेड इन 1973 by government of India is rechristened as DES in 1979 कौन हम एनसीईआरटी ना एनसीटीई ना सीएबीई ना एनआईपीए कोड़ा हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एनआईपीए कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ऑफ मेजरिंग रिटेंशन कोड़ा नुहे बोली पचारची ये कोड़ा नुह मेथड ऑफ रिकॉल ना मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ना मेथड ऑफ रीलर्निंग ना मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन कोड़ा हम जोटा कि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कही कौन व्हाट वाज अल्फ्रेड बिनेट्स थ्योरी कोटा अल्फ्रेड बिनेट्स को थ्योरी थिला कोड़ा अल्फ्रेड बिनेट्स को थ्योरी कौन थिला या भितर इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड बाय द कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन एट द सेम आइडिया जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बुझी पारलो कौन who said that intelligence in general was the power of good responses from the point of view of truth or fact कोड़ा हम थॉर्नडाइक ना टर्मन ना पेटरसन ना बकिंगहाम कौटी हम जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक कौन कही हु इज ऑथर ऑफ एनिमल लर्निंग published in 1898 किए ना एल थॉर्नस्टन ना जेफी गिलफोर्ड ना पी भर्नन ना एल थॉर्नडाइक किए पब्लिश करथिले 1898 एनिमल लर्निंग को ऑथर पब्लिश करथिले ना एल थॉर्नडाइक जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये कौन ना बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर कोड़ा हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग ना प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड coordinating na planning organizing directing and controlling na none of these कोड़ा हम जोटा कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग आउ कंट्रोलिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कही कौन ना कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म कौन गोटे
इज ए लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन ये कोटा ना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ना इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ना कॉग्निटिव साइकोलॉजी ना ऑक्युपेशनल साइकोलॉजी कोटा हबो जोटा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी which theory of motivation holds that the secrets of mind are locked within the cells of the nervous system को theory टा पॉन्स थ्योरी ना स्टिमुलेशन थ्योरी ना डेथ थ्योरी ना साइकोलॉजिकल थ्योरी जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कौन ना साइकोलॉजिकल देखिए कौन ना ए सिस्टेमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय पीपल्स इज कॉल्ड ये कौटा हम मेजरमेंट ना असेसमेंट ना इभालुएसन ना एग्जामिनेशन कौटा हम जोटा कि इभालुएसन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन कह डैश मीन्स समथिंग दैट कैन बी यूज टू हेल्प अचीव एन एम कौटा ना रिप्लेसमेंट ना रिसोर्स ना सोर्स ना फाउंडेशन ये कौटा हम जोटा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रिसोर्स कह कौन ना अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की humans have a dash to develop language कौन ना परसेप्चुअल सेट ना टेलीग्राफिक रेडीनेस ना लर्निंग सेट ना बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन कौटा हम जोटा कि ऑप्शन नंबर डी बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कॉमनली फाउंड in effective school administrators at primary level कौन हम या भितर मास्टरी ओवर सब्जेक्ट नॉलेज ना लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कौटा हम जोटा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट देखिए कौन ना द इवैल्यूएशन इन व्हिच वेराइटी ऑफ टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक एरियाज of the pupils is known as कौन हम ना कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ना कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये कौटा हम जोटा कि ऑप्शन नंबर सी कौन ना कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज रेफर्स टू पोर्टफोलियो जो रेफर कर कौटा ता भितर ठीक नुह बोली पचार इनकरेक्ट मु पूर्व क्लास रे पढ़ाई पोर्टफोलियो क्या कह जाए ताले कह कौटा नुह ताले इट इज ए टूल दैट क्लियरली इंडिकेट्स मेकिंग क्राइटेरिया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बुझिपाल एठी भी देछि कोन ना टीएलएम एठी केतटा क्वेश्चन देलानी तीनटा क्वेश्चन देलानी तने टीएलएम को कोन करबे ना भलो भाबरे देखि जिवे टीएलएम शुड बी यूज्ड बाय टीचर एज इट कोन कहि इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव ना मोटिवेट्स लर्नर्स टू further prepare such materials at home na supplements teaching learning process na prepares students mentally to sit in the class कौन हम ना supplements teaching learning process correct answer option number C कौन कही which of the following is a tool used for individual test of intelligence कौटा जोटा कि स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कौन ना स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट कौन कही ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्टेड दैट डैश इज क्रोशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज या फिर कौटा हम प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर ना कंडीशनिंग ना पनिशमेंट ना रोट मेमोराइजेशन कौटा हम जोटा कि प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए देखिए कौन ना एजुकेशनल मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड बाय जी टेरी फेज एंड जेवी थॉमस एज डैश या फिर कौटा हम A method of operation and good management should result in an orderly integration of education and society. Now, a body of educational doctrines comprises a number of principles. Now, theory and practice of the organization and administration of existing educational establishments and systems. Now, the force that integrates man and physical plant into an effective operating unit. कौन हम जोटा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन ना थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्जिस्टिंग एजुकेशनल एस्टाब्लिशमेंट्स एंड सिस्टम्स बुझिपाल देला कौन ए मोर पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स
towards school can be derived from enriched days कौन हम ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड ना कल्चरल हेरिटेज ना कस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशंस ना स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप कौटा हम ना जोटा कि ऑप्शन नंबर डी कौन ना स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप देखिए कौन ए प्रोग्रेसिव टीचिंग फिलोसफी दैट चैलेंजेस स्टूडेंट्स to examine power structures and patterns of inequality within the status quo was put forwarded by death कौन हम या भितर सोक्रेट्स ना पाउलो फ्रेयर ना स्वामी विवेकानंद ना रवींद्रनाथ ठाकुर कौटा हम जोटा कि ऑप्शन नंबर बी कौन ना पाउलो फ्रेयर देखिए कौन ना थॉर्नडाइक्स व्हिच लॉ ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ यूज एंड डिसयूज कही प्रथमे जानिबा थॉर्नडाइकर केतोटा लॉ थिला गोटे लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस आ गोटे कौन थिला ना लॉ ऑफ प्रैक्टिस तने कोथिर लॉ ऑफ प्रैक्टिस रो कौन थिला ना तार यूज भी थिला डिसयूज भी थिला तने से कौन पचारची थॉर्नडाइक्स व्हिच लॉ of learning is based on the laws of use and disuse माने law of practice जोड़ा कौन हम ना law of exercise है ऑप्शन नंबर सी बुझ पाइला तने थॉर्नडाइक रो केतटा ना law of readiness law of effectiveness law of practice रो यूज भी थिला डिसयूज भी थिला ये कौन which of the following statements is not an advantage of rubrics कोडा ना potential to be transferred into grades ना provides the child more control of their own learning process ना it restricts the students mind power ना narrows the gap between instruction and assessment कोडा हबो ना it restricts the students mind power जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखि कोन in which of the following test the word premises is associated with premises कौन कही मु मैचिंग टाइप रे कही कौन ना क्वेश्चन थी एपट्रो कौन कलम ए थी कलम बी थी एटी ऑप्शन थी एटी आंसर थी ताने क्वेश्चन पार्ट को कौन कुली कहउची प्रीमेजेस कहउची ताने आंसर टाइप को कौन कहउतला रेस्पॉन्स कहउतला ताले या भीतर कौन देछि प्रीमेजेस देछि कौन इन व्हिच of the following test the word premises is associated with या भीतर कोटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जोटा है कौन ना स्टेम अल्टरनेट रेस्पॉन्स क्वेश्चन अल्टरनेट भी हबो नहीं मैचिंग फॉर्म क्वेश्चन ना सिंपल कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन कोटा हबो जोटा कि ऑप्शन नंबर सी बुझी पारलो देखि कौन ना अकॉर्डिंग टू होम ईच रेनफोर्समेंट बिल्ड्स ऑफ ए रिजर्व ऑफ रेस्पॉन्सेस कोटा हबो या भीतर जोटा कि BF स्किनर से कौन ना रीएनफोर्समेंट ये कौन कही रीइनफोर्समेंट बुझिपार जोटा कि ऑप्शन नंबर डी कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू असेसमेंट एज लर्निंग ओटा नुहे बोली पचारची एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग ना यूज टू assesses the learning weakness of the students ना encourages peer assessment ना none of the above कोड़ा हबो जोटा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूज टू assesses the learning weakness of the students बुझिपारलो एबे किछि बेसिक देखिबा जोटा कि एग्जाम रिलेटेड गोटे कौन कही ओपन एंडेड आउट है क्लोज एंडेड ओपन एंडेड माने कौन ना निज मनरू लिखिबा ओपन एंडेड माने कौन ओपन एंडेड माने कौन ना निज मनरू लिखिबा सेमती क्लोज एंडेड माने कौन क्लोज एंडेड माने कौन ना गोटिए मात्र उत्तर थिबो क्लोज एंडेड रो केवल गोटिए उत्तर थिबो तार आउ अलगा उत्तर ही नथिबो केवल गोटे थिबो ओपन एंडेड कौन ना निज मनरू लिखिबो बुझिपारलो सेमती प्रथमे देखिबा प्लेसमेंट हमर कौन कौन अच्छी प्लेसमेंट अच्छी फॉर्मेटिव अच्छी डायग्नोस्टिक अच्छी समेटिव अच्छी एगुड़ा अच्छी
देखिए प्रथमे प्लेसमेंट प्लेसमेंट माने कौन ना पूर्व ज्ञान को जानिबा प्लेसमेंट माने कौन ना पूर्व ज्ञान को जानिबा जेमती कि कौन ना एंट्रेंस टेस्ट बुझी पाइल एटा कौथिर प्लेसमेंट रे आउ कौन हम जोटा कि 6 क्लास रु कोठी जीवो ना 7 क्लास को जीवो 6 क्लास रे थिबो किंतु जीवो कौन ना 7 क्लास को गोटे क्लास रु आ गोटे क्लास को जीवा को कौन कह जीवो प्लेसमेंट कह जीवो ओटीटी सीटीटी एसएससी एगुड़ा सब देले कौन कह जीवो ताकू भी कौन कह जीवो प्लेसमेंट बोली कह होची जोटा कौन ना न्यू लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड लर्न न्यू लैंग्वेज ए चाइल्ड लर्न नुआ लैंग्वेज कौन ना पिलाटा शिक्षा को कौन बोली कहउची ना प्लेसमेंट बोली कहउची जेमती कि न्यू लैंग्वेज कौन ना 1 क्लास टू अनदर क्लास ताकू कौन बोली कह जाओ ना प्लेसमेंट तापर कौन जानिबा फॉर्मेटिव का कह जाए क्लास समय रे बा क्लास रो एंड रे जे एग्जाम हुए ताकू कौन बोली कह जाए ना फॉर्मेटिव बुझी पारलो क्लास समय रे बा क्लास रो शेष रे जे एग्जाम टा हबो जो एग्जाम टा ताकू कौन बोली कह जिवो ना फॉर्मेटिव देखिबा तो कौन बोली कहउची ना असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव रे कोडा जाउची ना यूनिट टेस्ट मंथली टेस्ट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एगुड़ा सब कौन जाउची ना फॉर्मेटिव रे एबे कौन जानिबा ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का कह जाए ना गोटे पर्टिकुलर प्रॉब्लम जानिया पई जेउ एग्जाम करा जाए ताकू कौन बोली कह जाए ना डायग्नोस्टिक बुझी पालो गोटे पर्टिकुलर प्रॉब्लम जानिया पई जो एग्जाम टा करा जाए ताकू कौन बोली कह जाए ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोली कह जाए तो माने कौन ना टू सॉल्व लर्निंग डिफिकल्टीज इंस्ट्रक्शन देथिबो ताकू सॉल्व करबा पई कोन होतबो ना लर्निंग डिफिकल्टीज कष्ट होतबो जोटा कि रिमूव लर्निंग डिफिकल्टीज माने कोन जिमती स्टूडेंट सर्वेज परफॉर्मेंस टास्क एवडा सब कोथिरा जाउची ना डायग्नोस्टिक रे आ गोटे कोन ना समेटिव इवैल्यूएशन कोन जानथिबो सेटा कोन सबा शेष रे जोटा हुए जिमती कि फाइनल प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मिलवा एगुड़ा सब कौड़ा जाउची समेटिव रे जाउची आ गोटे कोन ना नॉर्म रेफरेंस का कहउची ना कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ अदर स्टूडेंट कंपैरिजन करिया का सहित ना गोटे स्टूडेंट सहित आ अन्य स्टूडेंट को सहित गोटे स्टूडेंट सह आ गोटे स्टूडेंट सहित कौन ना कंपेयर करिया को कौन बोली कहउची नॉर्म रेफरेंस बोली कहउची जेमती कि एग्जांपल कौन ना ओलंपिक्स नॉर्म रेफरेंस बुझी पाइलो ना कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ अदर स्टूडेंट्स बुझी पाइलो आ गोटे सब मन रखिए कौन ना स्कूल बेस्ड असेसमेंट जिते आसी ताने सेटा कौन जानिबे ना फॉर्मेटिव जिते बोर्ड बेस्ड असेसमेंट आसो से कौन आसो ना समेटिव बोर्ड माने शेष जो आसो से कौन समेटिव जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट आसो से कौन ना फॉर्मेटिव आ गोटे मन रखिए कौन ना असेसमेंट एज लर्निंग कौन असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या कहूँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या कहूँ और असेसमेंट इन लर्निंग क्या कहूँ देखा सब बेले मन रखिए देखिए कौन असेसमेंट और एज लर्निंग जिते एज आसीज ताला कौन ना सेल्फ असेसमेंट कौन मन रखिए ना सेल्फ असेसमेंट सेमती जिते असेसमेंट फॉर लर्निंग आसो ताने कौन फॉर माने फॉर्मेटिव फॉर माने कौन ना फॉर्मेटिव जोटा कि ड्यूरिंग दी ऑब्जेक्ट फॉर माने फॉर्मेटिव बुझीगल सेमती जिते ऑफ आसो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आसो सब मन रखिए कौन ना समेटिव जोटा कि कौन एट दी एंड सेमती असेसमेंट इन लर्निंग जिते आसो कौन हम इन आसो ना फॉर्मेटिव बा पियर लर्निंग बुझिपार एज रो काम कौन सेल्फ असेसमेंट फॉर जो फॉर्मेटिव
ଅଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସମାଟିଭ୍, ଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ବା ପିଓର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିବ ନା ଫିଅର ଅକର୍ସ ଇନ୍ ଏ ବେବି। ବେବିର ଭୟ କେତେବେଳେ ଆସେ କେତେ ନା 6 ମନ୍ଥ ପାଖରୁ। 6 ମନ୍ଥ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆସେ ତାର ଫିଅର ଭୟ। ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଜୁକେସନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର? एजुकेशन सब मन रखिए केते ना 3 टाइप्स। कौन कौन? गोटे है स्पेशल एजुकेशन, गोटे है कौन ना स्पेशल एजुकेशन एजुकेशन आ गोटे कौन ना इंटीग्रेटेड एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन आ कौन ना इनक्लूसिव एजुकेशन इनक्लूसिव एजुकेशन। माने स्पेशल एजुकेशन क्या कह जाउची जोड़ा दिव्यांग पिला माने पढ़ती जोटा गिफ्टेड स्टूडेंट। जो स्पेशल एजुकेशन क्या कहुची ना दिव्यांग पिला माने जोटी पढ़ती ताको कौन कहुची ना स्पेशल एजुकेशन। ताने इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या कहुची नॉर्मल पिला सहित दिव्यांग पिला माने जो मिसिकी पढ़ा को कौन कहुची ना इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहुची। इनक्लूसिव एजुकेशन क्या कहुची जो समस्ते मिसिकी पढ़ुचंती दिव्यांग पढ़ुचंती ता सहित नॉर्मल पिला भी पढ़ुचंती ता सहित डल मान भी पढ़ुचंती। जो 3 प्रकार मिसी पढ़ुचंती ताले से कौन कहुची इनक्लूसिव समस्ते मिसिकी पढ़ा। इनक्लूसिव इंटीग्रेटेड कौन ना नॉर्मल पिला सहित दिव्यांग पिला मिसिकी पढ़ा। स्पेशल एजुकेशन कौन केवल दिव्यांग पिला पढ़ती। बुझिपार?